अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे Oppo Reno 8T 5G के बारे में। Oppo Reno8 5G, release 2023, the 10th of February, 171 grams, 7.7mm thickness, Android 13, ColorOS 13, 128 GB, 256 GB storage, or 6.7, 1080 times 2412 pixels, 108 MP 1080p, 8 GB RAM, Snapdragon 695. 5G 4800 mAh network technology, GSM, HSPA, LTE, 5G LEUNCH announced 2023, the 1st of February, status available. Release 2023, the 10th of February, BODY dimensions 162.3 times 74 3 times 77 mm, 6.39 times 293x030 in, weight 171 grams, 6.03 ounces, SIM dual SIM, nano SIM, dual standby, display type AMOLED, 1B colors, 120 Hz, 500 nits, type, 800 nits, HBM, 950 nits, peak, size 6.7 inches, 108.0 square centimeter, approximately 89.6% screen to body ratio, resolution 1080 times 2412 pixels, 29 ratio, approximately 394 ppi density. Protection Asahi Glass AGC DT Star 2 platform OS Android 13, ColorOS 13 chipset Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G 6nm CPU octa-core 2 times 2.2 GHz Creo 660 golden 6 times 1.7 GHz Creo 660 silver GPU Adreno 619 MEMORY card slot micros dedicated slot internal 128 GB 8 GB RAM 256 GB 8 GB RAM UFS 2.2 main camera dual 108 MP f1.7 24mm wide 1.67 0.64 m af2 MP f3.3 34mm microscope 2 MP f2.4 depth. Features LED flash, HDR, panorama video, 1080p 830 fps selfie camera single 32 MP f2.4 22mm wide. Features HDR, panorama video, 1080p 830 fps sound loudspeaker yes, with stereo speakers, 3.5mm jack, no comms, WLAN Wi-Fi 800 2.11a B G N AC dual band Bluetooth 5.1, a 2DP LE, apps HUD positioning, GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS NFC yes, HC, NFC SIM radio no USB Type-C 20, OTG features sensors fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass battery type LiPo. 4800 mAh, non-removable charging 67W wired, PD, 100% in 44 minutes, advertised, reverse wired MISC colors black, starlight, midnight black, dawn gold, sunrise gold, models CPH 2505, price about 340 EUR. अब हम इस मॉडल की पिक्चर्स को डिटेल में देखते हैं। अगर इस फ़ोन को स्पेसिफिकेशन के लिहाज से डिस्कस किया जाए तो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है इसकी। इसका जो स्क्रीन साइज़ है, बिग स्क्रीन साइज़ है, 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ है, जिसके पिक्सल हैं 1080x2412 पिक्सल हैं, और इसमें कैमरा बड़े साइज़ का दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और इसमें जो रैम दी गई है 8 GB रैम दी गई है। इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट भी बहुत अच्छा लगा हुआ है 5G।
और जो इसकी बैटरी है 4800 mAh की बैटरी है और बैटरी भी काफ़ी अच्छी दी गई। अगर इस स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी अच्छा और अच्छा रिज़ल्ट देगा, गेमिंग के लिहाज से भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर इस फ़ोन से अगर आप पिक्चर और वीडियोस बनाते हैं उससे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ओवरऑल इसकी जो लुक है वो भी अच्छी लग रही है और स्मार्ट भी है फ़ोन। और जो बैक साइड पे कैमरे का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लग रहा है। ओप्पो ने काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश फ़ोन दिया है इस दफ़ा और इसका बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा और चिपसेट भी अच्छा लगा हुआ है। इस फ़ोन में टेक्नोलॉजी भी न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और कैमरे का डिज़ाइन भी नया दिया गया है। और फ्रंट साइड से देखें तो फ्रंट साइड से भी एक नई लुक दी गई है और काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, यूनिक कलर्स में अवेलेबल। ओप्पो जो है इसी तरह से एक मशहूर है कि वो कलर्स बड़े अच्छे देता है फ़ोन्स में, यूनिक कलर्स देता है और देखने में कलर आंखों को अच्छे भी बहुत लगते हैं और पकड़ा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। कलर के लिहाज से फ़ोन बहुत अच्छा है।